Voice Vision project of Vasudev Bhuvna Memorial Trust in association with SIMSA presents Entrepreneurial Idea Award 2019. This morning, I have a map, and it takes you through 5 key pieces of a journey. It starts with not the why, it starts with the what. It moves, I have to refer, it moves through how. We talk about the precious commodity of time, and then we get to the why. Now, oftentimes you may have heard of start with the why. And if you have a why, it's an awesome place to start from. But if you don't know your why, it is okay. You are here at a university working with teams to fill up your brains, your hearts, and your minds with a great what. सर कह रहे हैं उनके पास एक नक्शा है जिसमें 5 तत्व हैं। वो 5 तत्व आपके साथ वो शेयर करेंगे, आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं, हमें उस चीज़ पे 2 मेन विषय हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए। समय, जो कि है टाइम, और उसके बाद क्यों हम वो कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें ये नहीं पता कि हम क्यों उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, पर अगर ऐसा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें एंड गोल हमारा जो हमारा आखिरी पड़ाव है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें वो पता है तो हम ये जान सकते हैं कि हम वो क्यों कर रहे हैं। We move from the what into the how. I provided, there are 39 whats that I like to share in the map. I shared with you 3 of those whats, and I don't know how many of you were able to hear the audios that I had sent earlier, and I'd like to know how many heard about interesting versus interested, content versus context, and authenticity. Did you listen? Raise your hand, yeah? सर ने आपसे जो हमने सुबह एक क्लासरूम में वीडियोस प्ले की थी वो पहले से शेयर किया था। उसमें ये 3 विषय हैं जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इंटरेस्टिंग वर्सेस इंटरेस्टेड। आपके लिए क्या चीज इंटरेस्टिंग है और जो सामने वाला है क्या वो इंटरेस्टेड है, ये एक विषय के बारे में बात करेंगे। कंटेंट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। सो कंटेंट मींस कि क्या चीजें आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट से सर ये बताएं, कॉन्टेक्स्ट होता है कि क्या लोग उन चीजों को समझ पा रहे हैं, क्या उस जो चीजें आप उनको बता रहे हैं क्या उनको उसके बारे में पहले से कुछ अंदाजा है, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद ऑथेंटिसिटी हमारा तीसरा विषय है। ऑथेंटिसिटी मतलब कि किस चीज में कितनी सच्चाई है, इस बारे में हम आगे वार्तालाप करेंगे। So why that's important in your journey as pitching your projects? If you don't provide, a lot of times when we talk about projects, we jump right into the content. And we forget to provide those who are investing in us the context. Why? How does this apply? Why is it value? We have to be able to deliver that context. And too often in pitches, you rush into the content. And when I hear somebody pitch to me and run into the content, I have to back them up and I say, whoa, 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 whoa. Start with the greatest context. And sometimes that means start with planet Earth and zoom in to a particular population to which your product or service would apply. बहुत बार जब हम किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं, हम ये गलती आम तरीके पे करते हैं कि हम उसको खाली अपनी बात सुनाना चाहते हैं। हम उसको अपने बिजनेस के बारे में ही थोड़ी बहुत चीजें बताते हैं, पर उसको हम कौन सी इंडस्ट्री टारगेट कर रहे हैं इस बारे में कोई अंदाजा नहीं रहता। सो सर की बात का ये कंक्लूजन या समरी निकाला जा सकता है कि जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं, पहले उसे समझिए कि उसको इंडस्ट्री और उस बिजनेस के बारे में कितना अंदाजा है। जब उसको उस इंडस्ट्री और बिजनेस के बारे में अंदाजा आ जाता है, तब आप उसको अपनी कंटेंट या अपनी जो भाषा में आप उससे बात करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में जो उसको बताना चाहते हैं, उसको तब बताइए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, अगर आप सीधा जाके उसको अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे तो वो पीछे हट जाएगा, वो आपकी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पूरा बाहर का अंदाजा नहीं है। इसलिए सर बोल रहे हैं कई बार ऐसा भी होता है कि हम पूरी दुनिया या
ब्रह्मांड की बातें करते हैं और फिर उसके बाद हम बिजनेस पे स्पेसिफिकली आते हैं. Did you notice at the end of those audios, I asked you to do something when you were listening. I asked you to apply what you learned for 3 days. Well, 3 days isn't a magic number, it's science. If you take a knowledge set and you apply it for 3 days and you socialize it for 3 days, you have a higher retention factor. You have an 80% higher chance of retaining that information if you apply it for 3 days. Now, 3 days is nice, but in 3 months you may not remember. In 3 years you may certainly not remember. So the next step to taking something and apply it to 3 days is apply it for 21 days. Many of you may have heard, read, or listened to 21 Days of Habit. It's a popular book. 21 Days Creates a Habit. And habits are fine, but they're also smoking. Habits are fine, but a habit might be exercise that you really don't want to do, but you're a habit. After 21 days, you have a life choice to turn that habit into a quality of your life. That's a conscious effort to say, I want exercise to be part of my life. I want to be known for that quality. I want to embrace it. I want to enjoy it. I want to love it. सर ने आपके साथ 3 ऑडियो क्लिप्स शेयर की थी. उस 3 ऑडियो क्लिप्स में इस चीज की भी बात हुई थी कि आप जो सीख रहे हैं इन वर्कशॉप्स में या जो भी आप सीख रहे हैं अपनी अपनी क्लासरूम में, वो आप 3 दिन बाद अप्लाई करना एक जरूरी चीज है. वो नंबर 3 इसलिए चुना गया है, वो कोई जादू नहीं है बल्कि ज्ञान है. जब 3 दिन बाद अगर आप उस चीज को फिर से अप्लाई करते हैं तो 80% आपका दिमाग उस चीज को याद रखता है. अगर आप 3 दिन बाद उसको 3 दिन अप्लाई नहीं करते हैं तो आप उस चीज को भूल जाते हैं. सर बोल रहे हैं कि उस 3 दिन को आप 21 दिन में बदलिए. 21 दिन उस चीज को आप अप्लाई करें. 21 दिन क्यों चुना गया है? 21 दिन तक हम कोई चीज करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है. उस आदत को 21 दिन बाद आप अपनी क्वालिटी बना सकते हैं. आदतें अच्छी और बुरी होती हैं, तो हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बस जो ये अच्छी आदतें हैं उसको अपनी क्वालिटी बना देना चाहिए. 21 दिन उस चीज को यूज करें. I like how you said that. I'm much funnier than my translator so far, so a point. Yeah. Okay. Okay, so when pitching, there's a cartoon that says all this stuff that you want to say, and you can't wait to say it. You've rehearsed it, you're excited to say it, you're ready, you know what your pitch is, you got your timing down. But are they caring? Are they listening? How do you know you are connecting? What are your indicators to know you have made a connection? Are you going to wait to see if they invest? No. You're going to be proactive and you're going to take an interested stance. It is key and it is important to know your audience. If I had more time, I would have liked to know what each and every one of your passions are and your values are, so that I could speak fairly to each and every one of you and serve you better. I did not have that opportunity, but I would jump at that chance. In your pitch, you have an opportunity to know something about your audience. Whether it's research, whether it's approximation, whether it's to know what company they're from, but you also have the profound opportunity to begin your pitch with a question. Contact us at website www.voicevision.in, Facebook facebook.com/voicevision.in, Instagram voice.vision, Twitter @voicevision_in, YouTube voicevision, telephone 02240400000, mobile 98205 66010. Thank you for watching the video, and do not forget to like, share and subscribe.